Hi everyone, welcome to CAT by LPT. तो guys, finally CAT is over. Response sheets are out. तो आप सभी को आइडिया है कि how much you have scored, ठीक है, where you are standing at this moment of time. तो guys, now what should be the next step? ठीक है, after the CAT, what should I do? So we will be discussing in this session the post-CAT strategy. So see guys, the CAT score is not the final, right? It is just the very first step. तो यू गाइज नो कि कैट का जो स्कोर का वेटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 40 to 50%, राइट? 40 to 50% in your final conversion. So if you guys are scoring very high in the CAT, that does not guarantee you a conversion, right? Because GDPI, right? GDPI and VAT, it is the game changer. So even if you have not scored very high, then you can turn the table with the help of GDPI, right? तो CAT GDPI, VAT GDPI जो है ये सारी कहानी चेंज कर सकता है, right? So the very first step is to start early and stay disciplined. आपको VAT PI के लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा. डोंट वेट फॉर द परसेंटाइल्स, राइट? इवन दो इफ यू गो फॉर एनी कॉलेज, ठीक है, नॉन आईएम्स के लिए भी आप जाओगे, टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस के लिए भी जाओगे, तो यू हैव टू परफॉर्म वेल इन वैट पीआई. तो वैट पीआई कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट? सो डू नॉट पैनिक अबाउट योर स्कोर्स. If you have not scored very high, then don't panic. You can still manage it with VAT PI, right? तो आपका जो पोस्ट कैट स्ट्रेटेजी है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड द फाइनल आउटकम, राइट? सो डू नॉट worry about your scores right now, ठीक है? That is done. Now the next step is focus on the VAT PI. तो VAT PI के लिए start making your base, right? Start reading the editorials like the Hindu, the Indian Express. आप editorials पढ़ना start करो. Make your knowledge base of the current event, है ना? In VAT GDPI, if a topic comes up in the group discussion, any topic comes up, so you should be able to speak on that topic. So uske liye you have to make a knowledge base. So the good thing is read editorials, like good editorials like the Hindu, Indian Express. Prepare the HR answers, right? The basic HR questions like tell me about yourself, your strength, your failures, why MBA, right? Very common, very commonly asked why MBA. Prepare these answers. Prepare an outline first, discuss it with your seniors or your mentors. They will guide how to improve them, right? Revise your academics, the 10th, 12th, graduation basics. Start doing these things parallelly, right? The early you start, the advantage you will be having, right? Write SOPs carefully. तो आप previous year के students who have selected उनका SOPs देखो. How achieve your highlights, achievements, अपने highlight को achievements को highlight करना है on those SOPs. How to write a good SOPs, work on that. Proofread essays. Avoid generic responses, right? जो जनरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, अवॉइड देम, राइट? मीट डेडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द ऑल डिफरेंट कॉलेजेस हैव अ डिफरेंट डेडलाइंस, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दोज कॉलेजेस. सो बहुत सारे कॉलेजेस के जो डेडलाइंस है विद इन अ वीक ऑफ कैट क्लोज हो जाते हैं, तो कीप एन आई ऑन दैट, ठीक है? मेक अ शीट, जो भी मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस विच आर ऑन योर लिस्ट एंड along with that सबका डेडलाइन, so that कोई कॉलेज आपका मिस ना हो जाए, राइट? नाउ देयर आर अदर एग्जाम्स. तो ये तो बात हो गई कि वैट जीडीपीआई तो आपको प्रिपेयर करना ही है, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स ऑल्सो. So why should you prepare for those exams? See guys, you cannot entirely rely on your CAT score, right? Because a good CAT score does not guarantee you a conversion. So that's why we should definitely prepare for other exams, because many colleges, they accept different exam scores, right? They do not only accept CAT scores. There are good colleges who accept other exams as well. So to increase my chances, I should definitely prepare for the other exams, right? And these other exams are not going to be very much different from the CAT, like ZAT for example. So जो भी आपने CAT के लिए prepare किया, that is actually going to help you, right? But थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि these exams have a
different nature than CAT. Difficulty level will not be similar to the CAT. Exam pattern will not be similar to the CAT. तो कुछ major exams का we will be discussing जो इस within 1 month होने वाले हैं, and you should definitely go for those exams. ठीक है, do not wait right now. ठीक है, because आप CAT का prepare करते हुए आ रहे हो तो the momentum बना हुआ है. So don't break that momentum. Don't take a pause and quickly jump to these exams. You know that ZAT is in the month of January, so you have a full 1 month to prepare for that exam. आप CAT दे के आ चुके हो, now you know your weak zones, focus on those weak parts. ZAT में you will have to prepare for the decision making, DM. Start practicing DM today. ठीक है, आज से ही आप DM करना स्टार्ट करो. बाकी QA, LR you have already done, उसको बस you have to revise, right? So one by one, first of all, we have ZAT 2026 for XLRI Jamshedpur. तो in the ZAT आपका एग्जाम जनवरी में है, enough time you have. ठीक है, इसका जो पैटर्न है दैट इज एक एडिशनल जो चीज आप करोगे दैट इज द डिसीजन मेकिंग विल बी हियर. ठीक है, वर्बल, क्वांट एंड जीके, राइट? तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, राइट? वर्बल क्वांट इज विल बी सिमिलर टू द कैट. ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, सिमिलर टू कैट लेवल यू विल फाइंड इट, बट डिसीजन मेकिंग एक बिल्कुल एंटायरली न्यू टॉपिक रहेगा. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिसीजन मेकिंग. तो ऑन अ डेली बेसिस आप इसका बेसिक समझ लो, देन ऑन अ डेली बेसिस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. ठीक है, there are colleges like XLRI, XIMB, IMT Ghaziabad, TAPMI, Goa Institute, they accept the scores, right? तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही रहेगा दैट प्रैक्टिस डीएम डेली, रिवाइज योर क्यूए वीए का बेसिक्स आप रिवाइज करो. ठीक है, द जीके को आप थोड़ा सा इट इज अ क्वालिफाइंग. ठीक है, क्वालिफाइंग रहता है इसमें जीके, तो यू हैव टू पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत. तो जस्ट गो थ्रू द बेसिक जीके नॉलेज. ठीक है, बिजनेस जीके बेसिकली, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? तो अपने पास जो टारगेट में जैट डेफिनेटली होना चाहिए. इवन इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन कैट, कीप अपीयर इन द जैट. ठीक है, एज अ बैकअप प्लान बी, right? Then comes the snap. अब this exam is a speed based exam. ये जो exam रहता है, this is a highly speed based exam. 60 minutes, 60 questions, right? Unlike CAT where you can wait, look for questions, take your time. यहाँ पे ऐसा नहीं है. You have to be very quick, right? The best part about this exam is 3 attempts are allowed. Only the best of the three is counted, right? So the some of the good colleges are here like SIBM Pune, SCMHRD, SIIB, SIBM Bangalore. These are some of the colleges which are definitely worth, right? तो ये colleges CAT का score नहीं लेते हैं तो definitely आपको snap में बैठना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे because the syllabus is entirely same. ठीक है, difficulty level is very is not when we compare it to CAT के comparison में difficulty level is very easy, राइट? बट द गेम इज स्पीड. तो यहाँ पे गेम है स्पीड का, राइट? तो यू शुड नो द शॉर्टकट्स, फास्ट अरिथमेटिक, क्विक आरसीज, राइट? तो जो इसमें वर्बल एबिलिटी आता है दैट इज वेरी इजी, राइट? सिंपल ग्रामर लाइक idiom phrases, it involved para jumble like sentences you will find there, but easier one, right? तो यहाँ पे जो questions का level है that is not very high. It is a speed based exam, so you have to be quick. So in the coming days start giving the mocks, right? अगर आप snap को देने जा रहे हो, ठीक है, तो best part is 3 attempts. अगर आपका एक attempt अच्छा नहीं होता है तो you have 2 more attempts and the best of the 3 will be considered for your further process, right? So definitely it is worth trying. Then NMAT आपका already चल रहा है, राइट? तो इट इज अ अडेप्टिव टेस्ट. ये बाकियों से डिफरेंट रहता है. जस्ट लाइक इन अदर एग्जाम्स you have a test, but this one is adaptive test, right? इसमें भी आपको multiple attempts allowed होते हैं. There is no negative marking, right? इस एग्जाम में you will not find any negative marking, right? Since it is a adaptive test. ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न वही है. वर्बल रहेगा, लैंग्वेज, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा. इसमें देर आर कॉलेजेस लाइक NMIMS मुंबई बेस्ट चॉइस रहेगा यहाँ पे, प्लस अराउंड 20+ ग्लोबल स्कूल्स हैं. ठीक है, एनमैट का स्कोर इज एक्सेप्टेबल. अलोंग इन इंडिया के अलावा देर आर ग्लोबल स्कूल्स जो एक्सेप्ट करते हैं एनमैट का स्कोर.
ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वही है, यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजी बिकॉज एक्यूरेसी बिकॉज इट इज एन एडेप्टिव टेस्ट, और थोड़ा सा स्पीड आपको यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? So these are some of the exams which are lined up in the coming months. तो इस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना है. डू नॉट एंटायरली रिलाई ऑन कैट अलोन. इवन दो अगर आपने कैट पे बहुत अच्छा भी स्कोर किया है, even then it is a suggestion that have a plan B, right? Because a good CAT score does not guarantee you a conversion, right? तो अगर आपको अपनी opportunities को maximize करना है तो attempt like 3-4 exams you should definitely go, right? Stay consistent, that is very important. Now the admission, the process has just started, ठीक है? CAT exam होते ही it's just the beginning, it's not the end. तो ये ध्यान रखना है. Many of the people they get relaxed, okay हमारा CAT अच्छा हो गया, then everything is fine now. But no, it is just the beginning. Your actual journey is going to start now once the percentiles are out, right? So do not wait for the percentiles to come out, start preparing, right? So GDPI VAT that you have to do, right? No other options, क्योंकि आपको वो करना ही करना है. In every admission process GDPI VAT रहेगा, तो start preparing it today onwards, ठीक है? Strategize everything, right? So this should be your plan for the time, for the right now. Just after the CAT you have the exams lined up. Don't wait, just start preparing, okay? And along with it parallelly prepare for VAT PI as well. So I hope you like the session. That is all from this session. So do like and subscribe the channel and share as well.